A glass and ceramics manufacturer based in upstate New York created a video called A Day Made of Glass. Corning published this video online and gave us all a glimpse into the near future. In a remarkably short period of time, this visionary video captured the imaginations of millions, while demonstrating how highly engineered glass with companion technologies will help shape our world. In this video, we've built upon that vision. It's still a day made of glass, but we've expanded our thinking and we take it to a few different places. In this version, I'll be your guide. Along the way, we'll pause to examine some of the technologies displayed, and I'll talk about what's possible and what's not. So follow me as we visit a day in the future. Right, now let's go inside. This is Amy's room. She's not quite awake yet. And this is her tablet. These will be as commonplace as the mobile phone is today. Uh-oh, looks like her alarm's about to go off. Amy's tablet captures, organizes, and displays all her favorite things. It also helps her at school and manages her schedule. It's encased entirely in an incredibly thin, lightweight, highly durable glass with specialized optics. Her bedroom window. It's electrochromic. It changes state from opaque to transparent on demand. Now, I'm not sure if you noticed, but this closet door is actually a display driven by Amy's tablet. All the intelligence that you see on this display, all these apps, they're all residing and running on Amy's tablet. This display spans the entire door. It has its own small footprint operating system and is smart enough to be aware of Amy's device. And based upon proximity and other rules, it knows what to display and in what format. To make this part of Amy's day a reality, Corning is helping to deliver large-scale edge-to-edge displays. Corning looks to partners for operating systems and apps that seamlessly scale and transfer between tablets and larger displays. Ah, looks like we're off to school. Excellent. Let's catch a ride, shall we? This is Sarah, Amy's sister. Her tablet is just like Amy's. It's her primary computing device too. Uh-oh, this looks like mischief. This dashboard is made from full, thin, durable glass. It feels better than plastic and it looks better too. It's also a display, which means it can take on the appearance of pretty much anything. देखो एटा मु एक्सप्लेन कोची कोन ना से माने जेताले जो स्कूल को एठी बाहर की गले ए समय से माने गोटे ग्लास यूज करले तांका पाखरे जो टेक्नोलॉजी अछि माने आमे एते लैपटॉप कैरी करजे बही कैरी करजे एठी आ बही रो कोनोसी जिंस रहियोनी कॉपी रो कोनोसी जिंस रहियोनी गोटे ग्लास रहियो से ग्लास रे तांकर सब कंटेंट मोर जहा भी इन्फॉर्मेशन दरकार मोबाइल हो कॉलिंग हो जेंते हम मोबाइल सब जिंस रहउची सेंते से ग्लास भीतर सब जिंस रहला मोर बही मोर नोट सब रहिबो प्लस एज वेल एज माय फेवरेट म्यूजिक एनी काइंड ऑफ मूवी रिलेटेड थिंग दैट इट आसीला मते जो म्यूजिक चलेबार अछि मु जस्ट ट्रांसफर करबी थ्रू द ब्लूटूथ रे थ्रू द ब्लूटूथ और थ्रू द वाईफाई और हॉटस्पॉट कनेक्शन रे मु मोर जो इन्फॉर्मेशन टा रहउची से इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करबी सो दैट इज ए ग्लास टेक्नोलॉजी माने एठी भी गोटे रिलायबल ग्लास रहिबो माने जोटा कि एबे हमर डिफरेंट लेटेस्ट मॉडल जो vehicle सब आसुची फोर व्हीलर आसुची तादरी भी जिंस अवेलेबल हे गरानी. Of course, in driving mode, its function is to display critical and ancillary driving information. In tomorrow's world, configurable touch dashboards will be the norm. We'll have displays everywhere, not just in the home and in the office, but in your car too. Notice how Sarah's tablet was able to inform the car display? That certainly did. Okay, so how close are we to this? Well, it's doable now, but not at this scale and not at an affordable price. Further innovation in manufacturing is needed to get us there on a broad scale. Automotive electrochromic glass? That's possible now. And not just that, Corning can deliver window and sunroof glass solutions
that offer reductions in vehicle gross weight of up to 50 pounds or 22 kilograms, and that improves CO2 emissions, fuel consumption, and handling performance. ଏଠି ଦେଖ ଆମର ଯୋଉ ଗ୍ଲାସ୍ ୟୁଜ୍ କଲେ ମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ଯେତେବେଳେ ଭେହିକିଲ୍ ଆମେ ଯାଉଛେ ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲରରେ ଯାଉଛେ ଯୋଉ ଗ୍ଲାସ୍ଟା ରହୁଛି ଖରା ପଡ଼ିଲେ ଆମକୁ ଖରାଟା କାଟେ ତ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆମର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ବି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା ସେ ଗ୍ଲାସ୍ ଥ୍ରୁରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ କରିପାରିବା କିମ୍ବା ଆମର ସୁଇଟେବଲ୍ ୱାଇଜ୍ ଆମେ ତାର କଲର୍ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା। One thing is for certain, tomorrow will be much better at harnessing energy from renewable sources. At Corning, we're striving to improve solar technology. There's no reason to think that the rooftops of tomorrow will not be covered in low-cost, high-efficiency photovoltaic. এটা হচ্ছে जो टेक्नोलॉजी आम यूज करुचे एटा हूँ कर्निंग टेक्नोलॉजी। कर्निंग टेक्नोलॉजी बेसिकली आमर कोथरे काम हुए माने एटा हूँ सबुठारु आमर प्रकृति जो जिनसटा देछि से जिनस को लेके से यूटिलाइज करूछि सेटा टोटली काम होछि आमर सोलार सिस्टम में आमर घर छातटा पूरा सोलार पैनल ले कन्वर्ट हो जेंते कि आमे घरे इन्वर्टर यूज करूचे करंट पड़े आमर इन्वर्टर बैकएंड सपोर्ट दउछि एबे आमर सोलार सिस्टम बा सोलार पैनल ही दब जिते झड़ वर्षा ऊपर छात ऊपर से प्लेट होकर रहिबो झड़ वर्षा हेले भी सी आमर कोनोसी इफेक्टेड करिवो नाही तो सोलार पैनल थ्रू रे एटा कनेक्शन हबो देखा गो cells. And with improved aesthetics, today's unsightly solar panel will be tomorrow's attractive architectural feature. Imagine a school that's not just energy independent, but a school that's an energy provider. Now, this is a classroom I would have been excited to be in. There's a display, not just at the head of the class, but on every desktop. Large scale, seamless, thin, durable glass. All of it fronting low power, small footprint operating systems that communicate and serve as displays for personal computing devices. Look at this. Had these been at school when I was a boy, you wouldn't have been able to get me out of the classroom. This is the class community activity table. And again, we see large-scale, seamless designs, logic-enabled, durable, multi-touch glass. This may look like science fiction, but these already exist today. Perhaps not in this size or in this setting. But tables with interactive touch surfaces like this are being readied and deployed now. As software and touch interfaces advance, Corning expects community activity tables and interactive wall displays to be featured in classrooms globally. एटा देखो एटा होची हमर एक्टिविटी टेबल जे तुमे पिला बेले स्कूल मन करे जदी एक्टिविटी किछि हेतिबो बेसिकली सीबीएसई रेटा यूज करा जाय एक्टिविटी हमु देथिबे एई जिंसटा करी के आनिबो स्कूल ले बेसिकली दिया जाय एमदे चित्र करी के आनिबो एटा होची कॉमनली गोटे ग्रुप करी गोटे एक्टिविटी टेबल रहिबो माने एट ए टाइम एक्टिविटी कम्युनिटी टेबल मींस मल्टीपल गोटे ग्रुप करा हे जिवो सब स्टूडेंट मिसी की गोटे एक्टिविटी करिवे। Now let's go and see what Dad's up to. Beautiful, isn't it? All that logic encased in low profile, thin, resilient. एटा देखो एटा होची मेडिकल साइंस रे केमती हमर यूज होची केमती हमें गोटे लोकर कौन प्रॉब्लम अच्छी आ गोटे गोटे जगह सॉल्व होनी से जिनसटा आम आउ गोटे डॉक्टर पाखु केमती जीवा माने यूएसए गोटे डॉक्टर अच्छे ताठू कंसल्ट केमती करवा हमको यूएसए रो से डॉक्टर को आनिया पड़ो किंतु एठी से जिनस हेनी कर्निंग टेक्नोलॉजी से ताकू भी आउरी थ्रू द इंटरनेट आउ कर्निंग सॉफ्टवेयर जोटा मन अच्छे से सॉफ्टवेयर थ्रू रे बा से ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू रे ये हमको आउरी इजियर करना हो माने आमे जेकोसी लोकेशन रे थाई कि भी आमे देखो सॉल्यूशन दे परिबा। Touch sensitive glass.
I know what you're thinking. Why would one want an all-glass room? Well, for starters, these walls could be active displays and configured for different situations depending on the required purpose of the room. Here, Dan is in a video conference and the entire glass wall has become the display. Edge to edge, seamless, and touch sensitive. It's as if the remote location were now part of his room, making it easier to share and collaborate. Now that's breaking down barriers. This is really going to change the way we work. In here, all these surfaces on all this equipment are glass. Its pristine, non-porous, and easy cleaning qualities make it ideal for sterile environments, or any place where bacteria and viruses need to be contained. And with Corning, देखो ये जो इक्विपमेंट जो मेडिकल इक्विपमेंट आम ये यूज करा कम्प्लीटली ग्लास रे तैयारी अछि तुम देखियो हमर कौन से वायरस जो हमें आजिकल यूज करछे जो कोरोना वायरस आसी ये आसी तो वायरस कौन हुए बेसिकली मेटल मटेरियल रे बेसी माने चिपकी रही जाए ओके जमति कि हमें कहबा जंग जो लगे सेटा हमर बेसी लुहा ए सब लगे तो ग्लास रे ते जिंस लगे नहीं ग्लास रे आइदर भांगी जीवो नले आदरे जर्म लगे एते कम रही है आम सब वाटरटा पानीटा आम कौन कह ग्लास रे पीऊ माने ग्लास कंप्लीटली ग्लास मेड रे जोटा पानीटा पीले सर भल लगे पीवा देख ये केमती रोचे research efforts in the area of antimicrobial surface technology, we imagine a specialty glass that inhibits the growth of microorganisms. With that, our tomorrow could be a safer place. Pretty amazing, isn't it? All that data captured a world away, transported, then displayed here, all in the blink of an eye. Wow. Although, just imagine the bandwidth needed to carry the data for this projection. And for that next generation high definition glass video display, simultaneously. Yeah, a lot. Well, we're thinking about that at Corning too, which is why we're preparing our glass optical fiber products to carry the massive surge in bandwidth required for scenarios just like this. Dan's got quite the job, doesn't he? Let's go see what Amy's up to. Looks like she's on the school field trip. Spectacular, isn't it? A large-scale, durable information wall made of glass. This is dynamic interactive signage at an entirely different level. It creates a barrier where you need one. It's informative, it's interactive, it's aesthetically pleasing, it doesn't block the landscape. In fact, in this case, it enhances it. And it's made of glass. When it's not displaying information. ये जो ग्लास टेक्नोलॉजी यूज होई छे के देखि हम कटक रे अछि देखियो लोपा गजर अनीसा सर म्यूजियम यस म्यूजियम एटा म्यूजियम रे अछि गुड एटा आस्ते आस्ते इम्प्लीमेंट होछि एटा म्यूजियम रे अछि मींस इट इज लाइक 3D थिंग ओके गुड हमर जो कोडी अछि जोब्रा म्यूजियम It's transparent. Can we do this today? Not quite. Hiding all those electronics while retaining optical clarity is tricky at this scale. We'll get there though. Starting with smaller devices, a bit like what these kids have. Perfect for augmenting reality. Let's watch what goes on here. These tablets, with onboard 3D cameras, sophisticated microprocessors, and graphic subsystems, can perform quickly enough to make sense of the immediate environment and to augment it with additional relevant content. All wrapped up in a durable, thin glass. Perfect for education. And perfect for a bit of fun too. That was an exciting day for Amy. And here at home, her tablet drives the family room edge-to-edge wall display. Proximity-based authentication is all that's needed to establish a pairing.
Now she can share all the best bits of her field trip with her family in next-gen, high-definition 3D. So here we are at the end. Right as Sarah completes her homework and prepares for bed, the glass optical fiber lighting dims and the house settles in for the close of a day made of glass. Of course, this is not just a story about glass. It's a story about a shift in the way we will communicate and use technology in the future. It's a story about ubiquitous displays, open operating systems, shared applications, cloud media storage, and unlimited bandwidth. We know there are many obstacles to be overcome before what we've just seen can become an attainable, reliable reality. But at Corning, we believe in this vision, and we're not waiting. Care to join us? ओके एटा हला हमर जो ऑपरेटिंग सिस्टम एटा मन रखथिबे एटा होची कॉर्निंग टेक्नोलॉजी इज द व्हाट लाइक इट इज चेंजिंग द वर्ल्ड माने हमर वर्ल्ड टाको पूरा चेंज कर दबो इट इज कंप्लीटली वी कंट्रोल विथ ए ग्लास माने गोटे ग्लास डिवाइस रे हमें कंप्लीटली कंट्रोल हे की रहइबो एंड बेसिकली ये ग्लास डिवाइस को जिबा पई हले हमको हाई बैंडविड्थ ऑफ नेटवर्क और हाई बैंडविड्थ ऑफ इंटरनेट हमको दरकार पड़िबो से भास्टली यूज है आम कह इज्राइल फॉर द मेडिकल साइंस सेक्टर से यूज हो जाए तुम्हें शुणी जो एंडोस्कोपी गोटे होता है माने आमर पेट भितर कौन हुए से गोटे एड बड़ा नली पसे पार्टी भितर भितर कैमेरा बुले देखिए कौन है बुझे माने जे पार्टी भितर पसे मैंने भटकना बांति कर ओके सो से मैंने कौन करते गोटे छोट टैबलेट दिखती से टैबलेट रे गोटे कैमेरा थाए सो से कैमेरा आम पेट भितर को जाए से स्कैन करके सब जिन बाहर करनी तो आमको कष्ट भी करने पड़ना था तो मेडिकल साइंस रे इज्राइल ए ग्लास टेक्नोलॉजी यूज कर एंड जापान मोस्ट ऑफ द पार्ट से माने ये जिन यूज कर सारे फॉर द नेटवर्क ये सब ये यूज कर आमर टेस्टिंग फेजेस रे अच्छी आमर टेस्टिंग फेजेस ये जस्ट कोरोना पूर्व 2019 डिसेंबर आउ जनवरी भितर महाराष्ट्र और कर्नाटक रो दुटा छोट गाँव रे ये 5G टेस्टिंग आमर चलता से आमर 5G मोबाइल रो कॉन्फ़िगरेशन बा 5G कही आमर सब प्राय मोबाइल आमर बिक्री होची किंतु 5G टेक्नोलॉजी आमर आसीनी एटा टेस्टिंग फेजेस रे अछि 2009 रे एटा हेतिला आ सेठी ही स्टॉप हो जाइए आ वंस से 5G आसी जो माने जतरा आमर बैंडविड्थ और इंटरनेट स्पीड आमर जतरा अधिक होबो जेमति कि हमें वर्चुअली जूम थ्रू रे कनेक्टेड हे पारुचे जोटा कि ऑन जतले आमर 2002 आउ 3 भितर आम एटा भाबुथिले जे हाँ केबे एमती दिन आसे जोटा कि हमें वर्चुअली सब पिला डिफरेंट जगह थाई कि भी क्लासेस करि परिबे सेटा हमें गोटे ड्रीम बोली भाबुथिले से ड्रीमटा 10-12 वर्ष पर फिलअप हैला सेमती जतले 5G आसी जीवो तो 10-12 वर्ष जो टाइम नेला सेतबे 4G नथिला एबे 4G इंटरनेट स्पीड टिके अधिक अछि अधिक इंटरनेट सब अवेलेबल अछि तो ये जो एक्सपेरिमेंट जोड़ा चली एटा खूब शीघ्र आगू आसो जोटा कि आम 3D ग्राफिक्स थ्रू रे सब जिन देखी पारिबा 3D टेक्नोलॉजी थ्रू रे आम सब एक्सेस करि परिबा आज वेल एज आमर इंटरनेट फास्ट रहिले आम मेडिकल साइंस रे एटा गोटे बड़ रिवोल्यूशन हम जो जगह रे जो रोगी थाउ आ जो डॉक्टर सहित आम कंसर्न करने को चाहूँ एटा कंसर्न करि परिबा तो ये आम डॉक्टर आप भी आसीगला जहाँ कि आम डिजीज कौन रहिले आम डॉक्टर मान पठेले से ऑनलाइन डायग्नोसिस करके भी हमको पठे पार्टी कौन कौन मेडिसिन नबार अच्छी तो सेटा गोटे फैसिलिटी रोचे तो एबे भी यही इंटरनेट थ्रू रे बेसिकली आम मोस्ट ऑफ द 40 to 50% आम टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन हो सारे सो आफ्टर 2 to 3 years जदि एमती रहिला सो यही सिचुएशन रहिला किसी जो पेंडेमिक ये सब जिनस जदि रहिबो सो वी आर कंप्लीटली ऑन द टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन आमे आवर स्कूल कॉलेज बोली छि कांसेप्ट रहिबोनी सो आवर होम इज आवर स्कूल एंड कॉलेज एंड आवर रिसर्च पार्ट बाय सिटिंग योर होम यू कैन टेक द फ्लेवर ऑफ योर एजुकेशन एंड यू कैन वर्चुअल कनेक्टेड जेमति कि से फ्लेवर तमे पाउथलो स्कूल कॉलेज रे तो से फ्लेवर तमे एटी वर्चुअली पाई परिबो through this internet connectivity when the 5G technology और 5G connection और bandwidth जोटा कहा जाए इंटरनेट स्पीड जोटा हम बैंडविड्थ रे कैलकुलेट होता है सेटा जते बळे अपन फर्स्ट हे जिवो तो हमें
एई फीचर को भी आमे आसी परिबा आउ किछि वर्ष गले बुझि पाइलो लोपा अनिशा बुझिला Yes, sir. भल लागिला से Yes, sir. ओके ठीक अछि पुनी नेक्स्ट सेशन ने मु आउ इंटरनेट विषय तुमको कहबी आउरी भी मजादार वीडियो अछि इंटरनेट यार तुमको देखेबी ओके ठीक अछि चलो बाय Okay, sir. Thank you, sir. बाय